invite Sri Uday Krishna sir from Art of Living Foundation on the topic health of your lungs and breathing exercises. Thank you, Charu ma'am. Thank you, Vaid sir, Rajesh ji, and all the organizers. It's a pleasure being invited and speaking on a matter which is of national, international importance, as well as it's the gravest concern area for humanity. I'll start my talk with a personal story which has been very touching. पहले क्या होता था, वैद्य के यहाँ लोग चिट्ठी में अपनी बीमारी लिखते थे और वैद्य लोग उसका जवाब या जवाब के साथ साथ दवाइयां भी भेज दिया करते थे. तो हमारे इलाके में भी एक बहुत मशहूर वैद्य थे. उनके पास 2 पेशेंट्स ने चिट्ठी लिखी. एक को कैंसर था और उन्होंने अपने कैंसर के सिम्टम्स लिखे, और दूसरे पेशेंट को नॉर्मल कोल्ड एंड कफ था. उन्होंने अपना बीमारी लिखा और जो सिम्टम्स लिखा अकॉर्डिंगली इट वाज ए केस ऑफ नॉर्मल कोल्ड एंड कफ. वैद्यराज ने दोनों चिट्ठियां पढ़ी. एक को देखते ही वो समझ गए इनको तो कैंसर हुआ है, ये ज्यादा से ज्यादा 2 महीने रह सकते हैं. दूसरे को देख के वो समझ गए ये तो नॉर्मल कोल्ड एंड कफ है, इसको चिंता करने की जरूरत नहीं. उन्होंने दोनों को चिट्ठी लिखी. कैंसर वाले को लिख दिया, सर आपको कैंसर हो गया है, भगवान के नाम लीजिए और जो भी अच्छा कर्म जाने से पहले कर सकते हैं करिए. और उन्होंने लिखा जो कोल्ड एंड कफ वाले को कि भाई आपको सिंपल कोल्ड एंड कफ है, आराम से खाओ पियो, मजा मस्ती करो, कोई जरूरत नहीं है. प्रॉब्लम हुई डिस्पैच सेक्शन में. डिस्पैच सेक्शन में जहां दवाइयां डिस्पैच कर रहे थे वहां पे चिट्ठियां इंटरचेंज हो गई. कोल्ड एंड कफ वाले को कैंसर वाले की चिट्ठी चली गई और कैंसर वाले को कोल्ड एंड कफ की चिट्ठी चली गई. अभी जैसे डॉक्टर वैद साहब हैं तो फिर वो 3 महीने के बाद जो कैंसर पेशेंट है वो उनसे को मिलने के लिए आया कि सर आपने तो बहुत अच्छा दवाई दिया, हमारा तो पूरा बीमारी ही चला गया. सो डॉक्टर गॉट शॉक्ड, अरे आप जिंदा कैसे हैं? तो उन्होंने बोला सर आपने ही तो लिखा था कि मुझे नॉर्मल कोल्ड एंड कफ है, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, तो इस हिसाब से मैं जिंदा हूं. तुरंत डॉक्टर का एंटीना घूमा और उन्होंने अपने कंपाउंडर को बुला के बोला वो दूसरा पेशेंट जो था उसका पता करो उसका क्या हाल है, जिसको एक्चुअल में कोल्ड एंड कफ हुआ था. तो जब उनको पता किया तो पता चला वो तो इतने डिप्रेशन में चले गए, वो 1.5 महीने में ही ये दुनिया छोड़ के चले गए. तो ऐसा कहते हैं कि हमारा जीवन वैसा ही होता है जैसा हमारा मन होता है. अब मन तो कोई खराब करना चाहता नहीं है. मैं ऐसे भी लोगों से मिला हूं जिनको कैंसर है एंड दे आर वेरी हैप्पी, दे आर वेरी कंटेंट. और मैं ऐसे भी लोगों से मिला हूं जिनके जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं है बट दे आर डिप्रेस्ड. अब ये दोनों के बीच में अगर आप डिफरेंस को स्टडी करें तो योगिक साइंस सेज कि द डिफरेंस इज इन द लेवल ऑफ प्राणा. मन जीवन ये सब समझने की चीज है, पर क्वांटिफाई अगर हम कर सकते हैं तो उस चीज को कहते हैं प्राणा. अब सारे स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को ले लीजिए, सारे हीलिंग प्रोसेसेस को ले लीजिए, ये सारे एक ही चीज के ऊपर काम करते हैं, वो है प्राण या प्राण शक्ति या द बायो एनर्जी इन आवर बॉडी. इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, not only from person to person. During a course of days time, it varies like stock market. When we get up in the morning, we find our prana to be high. So when our prana is high, mind is stable. As the day progresses, the prana goes down, stress goes up, and our mind becomes agitated, and accordingly our life changes. आप सुबह का लाइफस्टाइल देखिए. व्हाट वी ईट इन द ब्रेकफास्ट, वी टेक हेल्दी ब्रेकफास्ट, स्प्राउट्स, फ्रूट, फ्रेश एंड ये. व्हाट वी ईट इन द इवनिंग टाइम व्हेन प्राणा इज लो एंड स्ट्रेस इज हाई, ऑल द जंक फूड ऑफ द वर्ल्ड, मोस्ट ऑफ द टाइम. Just imagine for a second, if pav bhaji is served to us in breakfast, will we enjoy it? No.
We need a minimum amount of stress even to enjoy the pav bhaji in the morning. If you look at all the people who are addicted to one vice or other, you will find their frequency of addiction increases as the day progresses. All the smokers, when they get up, their frequency is low in comparison to the frequency what is there in the evening. So there is a strong connection between even the temptation and our response to it. And this relation can be understood nicely if we attend to prana, if we study prana, or if we play with prana. Prana is the core of Art of Living de-addiction program, Art of Living healing programs. As far as temptation is concerned, as far as addiction is concerned, it's very easy to handle temptation or addiction with just raising the level of prana. कहते हैं high prana leads to settled mind, and this zone is very, very free of addiction and very, very fertile for all kinds of healing. Whereas low prana or stressful mind is the hotbed of all the addictions, and here healing is most difficult. So where do we get prana from? Gurudev says there are only 4 sources of prana. If we attend to any one of the 4 sources of prana, we can be very, very comfortable and apt in handling our mind and the urges. What are those 4 sources? First is food, second is sleep, third is happy meditative mind, and fourth is the breath. I repeat, food, sleep, happy peaceful mind, and breath. Normally we have been attuned to take prana only from food, but it's not so. There are other sources: sleep, happy meditative mind, and breath. In fact, breath is the most neglected one. And if you look at the breath, it does 2 things. It cleans the system as well as it energizes the system. So, studying the prana, studying the breath, giving it a direction is pranayama. And when we do understand the prana fluctuation in our body, we know and understand how to handle ourselves. For example, I'll tell you, we were talking about the cigarette and tobacco addiction. We have Ujjayi Pranayam. Ujjayi Pranayam is very, very powerful in taking the prana directly to the brain. So in our de-addiction program, we teach them, whenever you are finding an urge, just take 10 or 20 Ujjayi breaths. Immediately the prana will go to the brain and you will feel far more relaxed and you will be relieved of that particular urge for that particular moment. And beautifully, it's the only pranayam which you can do even while driving your car. So Ujjayi Pranayam is very nice and it has given us very nice results. Then we were talking about lungs cancer. In yogic science, we say our lung is from navel to the collarbone. The lungs zone is from navel to the collarbone. And unfortunately, as I said, we are very, very poor in attending to the most important source of prana, that is breath. And we are also very poor in utilizing our lungs capacity. If we are athletic, if we are a good sports person, if we have been having a very nice physical life, then our percentage is close to 30 to 35%. I'm talking about the yogic sciences. So rest 60 to 60% of the lungs zone remains unutilized. And what is that? From navel to the collarbone. So in Art of Living, we have another program called 3-stage pranayama. 3-stage pranayama removes different parts of the lungs. So when you have expanded the lungs capacity, what happens? Your breathing becomes normal
your prana goes up and your mind gets settled. So practicing 3-stage pranayama over a sufficient period of time takes you out of any urge to smoke or have tobacco effortlessly. Then, as I said, there may be a lot of negative emotion associated with a person for his reason to be into some kind of addiction. कहीं नौकरी चली गई है, पैसे का स्ट्रेस है. There are a lot of negative emotion or stress which is actually coggling his mind, and in order to get out of that, he wants to have some sense of relief, and that is why into addiction. So when we attend to the breath is associated with different emotion. When we are angry, our breathing is in a particular fast rhythm. Have you observed? When we are angry, our breath is fast. When we are sad, our outgoing breath is longer. You look at somebody admitted to a hospital. When we are happy, the incoming breath is longer. आपको 1 करोड़ की लॉटरी लग गई. So what happens? Incoming breath becomes longer. So corresponding to every emotion of the mind, there is a corresponding emotion of the breath. So till now it has been one-way circuit. Our emotion changed and accordingly our breathing changed. So we have this beautiful process called Sudarshan Kriya, where we change the rhythm of the breath and accordingly that flushes out all the negative emotion stored in the head. So we are fresh and light. Now one who is fresh, light, energetic, happy, content, he does not have a valid reason to fall back to addiction. And most important is connecting to the source, connecting to your spirit gives you such a strength that you can ride over any kind of problem, any kind of cancer, any kind of addiction. See, आज भी इस देश में ऐसी प्रथा जिंदा है कि दुर्गा पूजा के दौरान 9 दिन लोग, आधे से ज्यादा लोग दारू को हाथ नहीं लगाते थे. कोई तो शक्ति है. अगर उस शक्ति को हम टैप करें तो हम काफी लोगों को इन चीजों से निकलने में मदद कर सकते हैं. सो फाइनली कहते हैं कि आदमी 2 ही कारण से कोई काम करने को तैयार होता है, या तो डर से या लालच से. तो हमारे आसपास के जो लोग हैं उनका भी रोल बनता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी नशे में फंसा है तो उसको हे दृष्टि से न देखें, उसको प्यार दें, अपनाएं, भावनात्मक लगाव रखें और प्यार से उसको अपने साथ निकाल के ले आए. Now, as Rajesh ji was saying, I need to demonstrate one pranayama. So I have chosen one pranayama, that is a straw pranayama called straw pranayama. So we all will learn it together. And this pranayama is so powerful that it gives you same pleasure as that of smoking. So if there has been a discussion and debate in our yogic practices कि whether the person is smoking to get the kick out of nicotine or activate the gland which is activated by the straw pranayama, which one is giving him more joy and why is he doing it? In our yogic sciences we say that because it touches a gland. When you breathe it like that, it gives you different hormone secretion and that is very relieving. So we'll learn straw pranayama and then we'll lead into a 5-minute small meditation. Yeah, is that okay, ma'am? Okay. So I'll first teach the straw pranayama and then we'll do it together. So straw pranayama has 2 parts. One is when you are inhaling from the nostril and exhaling from the mouth with a mouth like a straw. Do it together. As if you are blowing out the breath from a straw. And after 10 to 12 rounds, this thing changes. We inhale from the mouth as if there is a straw and exhale from the nostril.
between an inhalation and exhalation, I'll say hold, and that hold will be for 4 counts. Hold, 2, 3, 4. Okay. Then again we'll inhale, then again we'll hold, and then again we'll breathe out. So I'll keep you guiding. So what happens after straw pranayam? You will feel your mind to get into lot of relaxation. So we'll maintain that relaxation for 5 minutes, and I'll guide you to a small meditation. So it's not a big rocket science. We all can do it together and enjoy the process. Done? So let's all close our eyes. If we are wearing specs and all, we can just remove it. And close your eyes with a smile on your face. Inhale from the nostril. Hold, 2, 3, 4. Exhale from the mouth like a straw. Empty your lungs. Hold. Again inhale from the nostril. Hold. And exhale from the mouth like a straw. Hold. Inhale from the nostril. Hold. And exhale like a straw. Empty your lungs when you are exhaling out. Exhalation will be longer than inhalation. Hold. Inhale. Hold. And exhale. Empty your lungs out. Now continue this for 5 more times. Continue for 2 more rounds. Inhale. Hold. Exhale like a straw. Hold. And inhale for the last round. Hold. Breathe your lungs out like a straw. Hold. And now reverse. Inhale like a straw from your mouth. This time inhalation will be longer. Hold. And exhale from the nostril. Hold. Inhale longer like a straw. Hold. And exhale from the nostrils.
Hold. Inhale like a straw from the mouth. Hold. And exhale from the nostril. Hold and inhale from the mouth. Continue this for 7 more rounds. Inhalation is longer this time with the mouth. Last 2 rounds. और आंखें बंद रखते हुए ही विश्राम करें. रिलैक्स विथ योर आईज क्लोज्ड. नाउ द ब्रेथ हैज बिकम एफर्टलेस. अब आपकी सांस सामान्य हो गई है. अपने आप आ रही है और अपने आप जा रही है. हर आती हुई सांस हमें प्राण शक्ति दे रही है और हर जाती हुई सांस हमारे शरीर को विश्राम दे रही है. Every incoming breath brings prana to your system, and every outgoing breath relaxes your body. सांस भरें और छोड़ते छोड़ते शरीर को ढीला छोड़ दें और मन को भी ढीला छोड़ दें. मन कहीं जाना चाहे उसे जाने दें. माइंड वॉन्ट्स टू वॉन्डर, लेट इट वॉन्डर. अपने आसपास की आवाजों को सुने. सभी तरह की आवाजों को आने दें, स्वीकार कर लें. आप विश्राम करें.
शरीर में कहीं दर्द है वहां अपना ध्यान ले जाएं और सांस छोड़ते छोड़ते शरीर के उस दर्द के हिस्से को ढीला छोड़ दें। सांस लें और छोड़ दें। मन में कोई बेचैनी है उसके प्रति सजग हो जाएं। Breathe in with a smile and breathe out and let go your restlessness. मुस्कुराते मुस्कुराते सांस भरें और सांस छोड़ते छोड़ते शरीर को ढीला छोड़ दें। धीरे से मुस्कुराते मुस्कुराते जब भी अच्छा लगे अपनी आंखें खोल सकते हैं। गुड। हाउ वाज इट? Simply. थोड़ा समय प्राणायाम और थोड़ा समय ध्यान के लिए डेली हमको निकालना चाहिए, है ना? जो मैंने टेम्पटेशन की बात करी, एडिक्शन की बात करी, हमारे आर्ट ऑफ लिविंग प्रोग्राम्स में तो एडिक्शन छोड़ने को बस बोलते हैं कि आपको कोर्स के दौरान नहीं करना, और उससे ही कितने लाखों लोगों ने अपना सारा एडिक्शन छोड़ दिया है। हाँ, कैंसर ट्रीटमेंट के ऊपर मैंने बात नहीं की बिकॉज इट्स ए वेरी कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट एंड वी हैव ए सेपरेट श्री श्री कैंसर केयर वेयर डिपेंडिंग अपॉन द स्पेसिफिक केस एंड स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट we are researching as well as trying to treat people with different stages of cancer without chemo. So those who are interested can Google Sri Sri Cancer Care. And if anyone has questions over here, I am available. Ask questions can type in the chat box. Can I ask? सिर दर्द के लिए यही काम कर जाएगा जो है। ये बात पूछना चाहती थी, जिस तरह आजकल पोल्यूशन है, तो अब अगर इतना ब्रीदिंग और ये एक्सेलेशन करेंगे तो वो क्या सेहत के लिए ठीक रहेगा? देखो, नॉर्मली ड्यूरिंग द प्रेजेंट स्टेट ऑफ पोल्यूशन we don't recommend to do pranayama, okay, because pranayama tends to take the air to the portion of lungs which is normally not touched upon in normal breathing, okay. So it's not recommended if the pollution level is very high. Rather we recommend that you meditate, number one. Number two, there are a lot of pranayama for headache and all. But right now, what is the best medicine for you is to have a glass of warm water, right? So whenever you are feeling headache, that means the prana is low in that particular part of the body. So when you drink warm water, it catalyst into metabolism and you get a relief. That was wonderful, Udayji. Yes, sir. I think a great session. मैं यही कहूँगा, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।